Today we have with us Dr. Riya Sharma. She has got rank 920 in this year INI-CET November 23, and she has been allotted MD Psychiatry at AIIMS Gorakhpur. And I would like to introduce her because many of the students that are from the private medical college, and they are not that confident about how to approach PG. So she will be like your confidence booster, because she herself had done her MBBS from a private medical college, and then getting into prestigious AIIMS. It's itself icing on the cake. So I would ask Riya to please introduce yourself. Hi, I'm Riya. I have done my MBBS from Subharti Medical College, Meerut, and I've been allotted MD Psychiatry, as you said, in AIIMS Gorakhpur, and this is it. So how was your education like in Subharti? How much it helped in cracking the PG? Okay, so Subharti is a private medical college, which I think people have a lot of assumptions about private colleges. Yeah. I I think the only drawback of being in a private college is fees. Not many people can afford it. Apart from that, considering education, it was a great college. I had great teachers and faculty, and academics is taken very seriously there. Academics, attendance, postings, and everything. And in my UG days, I have been a fun person, not a very nerdy person. I was always like, going to trips and having like time for myself and my friends. But around exams, I used to take exams very seriously. वो रहता था दिमाग में कि prof आ रहा है, अब पढ़ना है, पढ़ने का टाइम है. तो it was always a balance between studies and enjoyment. So that's it. Okay, great. It is very important to enjoy your UG life because we get it only once. So, when did you started preparing for seriously for INI-CET? INI-CET was never even my goal. Like when I like started my journey of preparation, दिमाग में कभी नहीं था कि INI के लिए पढ़ना है. It was always NEET, and it was always कि कोई भी सरकारी मिल जाए, अपनी ब्रांच मिल जाए किसी भी सरकारी में. That was the only goal I started with. But धीरे धीरे thankfully मैंने अपना aim बढ़ाया. I felt like I can do better. And for November INI, I would say my journey started after May INI. मतलब मैं आने के बाद मेरे को लगा कि ठीक है, आई कैन डू इट. वरना नीट में माय रिजल्ट वाज नॉट वेरी गुड, आई वाज नॉट सेटिस्फाइड. तो तब मुझे लगा कि आई शुड बी प्रिपेयरिंग फॉर नवंबर आना है, अदरवाइज आई विल हैव टू टेक फुल 1 year to prepare for the next need. Okay, so how as you said earlier, that you were a very fun-going person in college. So how you yourself transitioned to a very serious mode of preparation? आई थिंक कि एक दिमाग में था हमेशा कि आई हैव टू ट्राई फॉर गवर्नमेंट कॉलेज. मुझे करना है कैसे भी. एंड ऑल्दो आई वाज नॉट वेरी सीरियस अबाउट इट इन माय यूजी डेज, बट इंटर्नशिप के बाद व्हेन आई केम होम आई ट्राइड टू स्टडी थोड़ा बहुत इन इंटर्नशिप. दैट डिडंट वर्क आउट वेल. एज यू कैन आई थिंक अंडरस्टैंड कि इंटर्नशिप बहुत बिजी रहता है, एंड यू ऑलवेज हैव दिस फियर कि लास्ट डेज है, हमें एंजॉय भी करना है, हमें पढ़ना भी है, सब कुछ Exactly. करना है. तो इतना कुछ हैंडल नहीं हो पाया. तो आफ्टर इंटर्नशिप व्हेन आई केम बैक होम, था कि पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है नीट के लिए. आई हैव टू गिव इट माई 100%. आई वॉज यूजिंग अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म देन. तब बहुत मेन वीडियोस आर इन सब में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो गया. इवेंचुअली आई कुडंट अंडरस्टैंड कि इवेंचुअली मुझे कहाँ से पढ़ना चाहिए. बट लाइक लास्ट ईयर नवंबर में आई गॉट इंट्रोड्यूस टू जेनवोरा मैम. तो उनका अकेडमी पे फ्री वीडियोस वगैरह देखना शुरू किया, एंड धीरे धीरे मतलब कॉन्फिडेंस गेन हुआ उन पे. एंड देन मतलब लगा कि हाँ, इट इज नॉट एज डिफिकल्ट एज वी थिंक. समटाइम्स हम उस एग्जाम को और बड़ा बना देते हैं, जितना डिफिकल्ट वो है हम उसको और डिफिकल्ट बना देते हैं इन आवर ओन माइंड. तो जैनब मैम का वीडियोस देख के मुझे लगा कि नहीं, इट इज डूएबल, आई कैन डू इट. एंड बस तब से आई वुड से लास्ट नवंबर से मैंने अपनी लाइक तरीका पढ़ने का आई चेंज्ड. आई इट बिकेम मोर स्मार्ट वर्क देन हार्ड वर्क आफ्टर नवंबर. So, what in terms of you saying smart work, what was the you brought change at the ground level? I think we try to get very deep into concepts. मतलब concepts are important. I'm not saying concepts important नहीं है,
बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि फैक्ट्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. फैक्चुअल क्वेश्चंस भी बहुत पूछते हैं, बीट एम्स और बीट नीट. तो आफ्टर दैट व्हाट आई डिड वाज कि आई स्टार्टेड doing my preparation around previous year questions, around previous year topics. It was not random कि सब पढ़ रहे हैं कुछ भी पढ़ रहे हैं. It was more focused, and the focus was on revising it again and again rather than like doing everything. So I think that should be the main focus कि to know कि कौन सा subject कितना important है, किसको कितना time देना है. You cannot have favorites, you cannot play favorites कि this is my favorite subject तो मैं बार बार पढ़ रही हूँ. उस subject को उतनी importance हो जितना वो पूछा जाएगा. So I started my preparation accordingly. Oh, great. Um, I get a lot of queries regarding what sources to follow. Like, people are really confused whether BTR is enough or BTR plus rapid revision, or we should go for rapid revision. BTR should only be a supplementary. So, how was it that in your case? In my case, it was BTR. पहले cerebellum is new now. उससे पहले मैम was on an academy, तो वहाँ पे थोड़ा scattered था. But after cerebellum, it was only and only BTR. And I think जो approach I would suggest to somebody who's just starting, I would say कि make BTR your main source. उसके अलावा if you're confused between like कोई सब्जेक्ट नहीं समझ आ रहा, like my anatomy was very weak, for anatomy I used free videos on YouTube. You don't have to take a subscription for everything and anything, so you can just get over कि कहीं से भी YouTube पे देख लिया कोई टॉपिक वीक है. बट नोट्स आई वुड से कि इफ somebody is following BTR, नोट्स BTR के ही होने चाहिए ताकि वो बार बार रिवाइज हो पाए. डोंट मेक एक्स्ट्रा नोट्स. कहीं किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो गो टू यूट्यूब चैनल और समवेयर. सारे टीचर्स, बहुत सारी फ्री वीडियोस हैं, वहां से हेल्प लो एंड कम बैक टू BTR. And I think BTR is enough combined with previous year questions, obviously. Okay, so you were well versed with INI-CET previous year questions, or you followed NEET questions also for INI-CET? For I did NEET questions. I did 2 to 3 year NEET questions, not like पूरा 5 years के, but 2-3 साल के. Okay, from where? From which platform you followed? From platform I used for that was Marrow, and I also had Reflex. मतलब Reflex has many haters I think, but for me it worked well because बहुत simple वो है, simple है ऐप, तो बहुत User easily use हो interface. जाता है. हाँ, user interference बहुत simple है. Okay, you said that you used to give tests regularly on Marrow, or it was intermittently? It was intermittent. I think GT's का aim should be time management. What you should learn from that कि time management हो जाए. 200 questions है तो 200 questions in the given time पढ़ लिए with options. That should be the goal. Apart from that, जो गलतियां हैं उसको review करो. I don't think GTs को बहुत उनके score को don't take it to your heart, because you cannot be overconfident and underconfident with the GT. That is just a practice test. That is just for your practice. You cannot take it too seriously. You cannot get कि oh wow आज तो बहुत अच्छे नंबर आए या बहुत खराब नंबर आए. You'll be wasting 1 or 2 days over that. उससे better है just move on. Okay, you said that you did not get very good rank in May INI-CET or in NEET also. So, what do you think? What were the mistakes that you committed? You felt? I was not prepared for the last revision. I would say in NEET, जैसे जैसे एग्जाम पास आया, मैं बहुत पैनिक कर गई कि मतलब आई हैड नो क्लू कि अब 10 days में सिलेबस को कैसे रिवाइज करना है. आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट, एंड पीपल से दैट ओवर यूट्यूब अ लॉट कि लास्ट 10 days के लिए पढ़ाई करो. बट यू डोंट अंडरस्टैंड दैट. जब तक वो टाइम आता नहीं है तब तक नहीं समझ आता कि वो क्या प्रेशर है. तो लास्ट 10 days में आई कुड नॉट मैनेज माई रिविजन वेल. फिर फॉर दिस आई हैड मतलब इन माई माइंड कि मुझे लास्ट 10 days के लिए प्रिपेयर करना है. मुझे एक्चुअली माई गोल शुड बी कि वो पूरा सिलेबस जो भी मैंने पढ़ा है वो रिवाइज हो जाए लास्ट 10 days में. एंड वो बहुत कॉन्फिडेंस देता है व्हेन यू एंटर एग्जाम हॉल, यू नो कि आपने ये टॉपिक पढ़े हुए हैं विद इन द लास्ट वीक, तो बहुत कॉन्फिडेंस देता है एग्जाम हॉल में जाने में. So, how you did that? What changes you brought this year in November INI-CET? आई वुड से मेरा कंट्रीब्यूशन कम है. इट वाज ज़ैनब मैम के नोट्स थे. मतलब although an academy पे भी ज़ैनब मैम का कंटेंट था, but it was not as concise as cerebellum. Cerebellum पे her notes are very concise, and it is like if you are revising it again and again, तो उनका पूरा सब्जेक्ट पूरा वो नोटबुक रिवाइज करना लास्ट में इज नॉट अ बिग डील. इजीली हो जाएगा.
तो वो था। बाकी आई डिड हर ऑफलाइन बीटीआर ऑल्सो। तो ऑफलाइन बीटीआर में ये था कि 3 दिन में बस सर के ऊपर से चले गए सारे सब्जेक्ट्स, उन्होंने बोल दिया एंड मैंने सुन लिया। तो दैट हेल्प विद रिवीजन। Okay, acha, ma'am is conducting again this time that 3 days BTR. Do you know, matlab, do you feel that it has any benefit going for the examination, for especially for those who are not in Delhi or in are in peripheral colleges, they have to go and live there and take out the rents and all. It's a lot of hassles just before 1 month of the exam. So, do you think that one should go from peripheral colleges to attend those BTR sessions? I think that is a very like मतलब personal decision. I think कि preparation देखनी चाहिए कि क्या level है preparation का. For me, since मैं भी I don't live in Delhi, so मेरे लिए भी था कि वो travel करना and वहाँ रहना, वो सब arrange करना. It takes time, मतलब थोड़ा time and थोड़ा money जाता है उसमें. But I was confident कि मैं वहाँ 3 घंटे मेरे productive होंगे. I'll be studying, 3 subjects मेरे हो जाएंगे. But for someone I think who is not using BTR, मतलब पूरा religiously जिसने BTR नहीं पढ़ा है, वो वहाँ जाके I think 3 days won't be as productive, because वहाँ जाके you'll feel lost, you'll feel like कि एक दिन में 6-7 subjects हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं. So if you are well versed with BTR, then I would suggest you go for it. But if your preparation is not up to the mark, then rather stay home and revise yourself. And one of the question that many people ask that uh, that those who are first timer, that is the all throughout their MBBS they have only studied for the professional exam and they have not thought about anything else. So is BTR good for them? Because BTR, the matter is a lot of concise, it is very concise. So what happens is that people end up mugging it up rather than understanding it. So, do you think that is it worthwhile first timer can jump into BTR, or no? They should first build their concepts through rapid revisions and all, and then move on to BTR. If I could go back in time, I would have started from BTR. I think that was a mistake I did, that I was doing main videos and rapid revision. But I would say कि it depends from subject to subject. Like कोई subjects होते हैं, बेशक किसी ने prof के लिए ही पढ़ा है कि हम सिर्फ prof के लिए पढ़ते थे, but तब भी कुछ subjects हैं जो आपके बहुत weak होते हैं, कुछ subjects आपके काफी strong होते हैं तब भी. Like for me, final year subjects were like I liked surgery, I liked OBG. तो उसके लिए आई नेवर थॉट कि मुझे मेन वीडियोस देखने की बार बार जरूरत है. फॉर मी बीटा नोट्स आर वेरी कंसाइज इन दैट वे. बट फॉर सब्जेक्ट्स आई वुड से एनाटॉमी, ऑप्था एंड इवन बायोकेम, मैंने आई टुक अ बिट हेल्प. बट आई वुड से कि अगर कोई सब्जेक्ट नहीं समझ आ रहा है बीटीआर का, गो टू द मेन वीडियोस, जस्ट लिसन टू दैट रादर देन सब कुछ लिखने के, बिकॉज वो रिवाइज नहीं हो पाएगा. मेन वीडियोस पे जाओ, समझो उस कंसेप्ट को एंड देन कम बैक टू बीटीआर, यू विल अंडरस्टैंड इट. बिकॉज दैट्स हाउ आई डिड बायोकेम, दैट्स हाउ आई डिड एनाटॉमी, कि मैंने कहीं और से पढ़ा एंड देन मैं वापस बीटीआर पे जब आई तो मुझे समझ आने लग गई चीजें. Okay. Did you see your INI-CET scores? हाँ, आई डिड सी माय एनआईसीटी स्कोर, इट वाज 133. Okay, 130. Okay, fine. How much of you attempted this time? How much of it was correct, and how much it was wrong? 133 correct, and uh, I attempted 194. Okay. So that leaves 6 questions, so the rest were wrong. So, what is the right approach? Because many people are again confused here that should we take chance or should we not take chance? Because the margin of error in INI-CET is very narrow. Because once you get out of Hmm. 1,000, you are not going to get much good seats. So, what Hmm. is your take on this? I think INI में you have to be थोड़ा aggressive with your attempts, because if you're not attempting enough questions then you're already out of the race. 180 से ऊपर वैसे, 180 से नीचे वैसे भी मतलब considering कि कुछ questions गलत भी होंगे, I don't think 130 या 120 से नीचे वैसे भी कुछ मिलने वाला है. तो you have to attempt more, but those have to be very smart attempts. मतलब attempt करने का भी तरीका आना चाहिए कि कैसे rule out करना है. You cannot just like ABCD कुछ भी टिक कर आए. With NEET I would say कि you can attempt थोड़ा less, because since काफी रैंक पे भी काफी अच्छी सीट्स मिल सकती हैं. एंड दूसरा कि नीट में इतना डिफिकल्टी लेवल नीट का इतना नहीं है कंपैरेटिवली एम्स के कंपैरिजन में. एम्स हैज लाइक कभी कभी वियर्ड क्वेश्चंस जो कोई सेंस नहीं बना रहे हैं, जो है भी कि नहीं है मेडिसिन के. तो Yeah, मतलब इन नीट यू कैन. this time OPM question that thing, no?
हाँ वो ओपीएम क्वेश्चन, एंड आई डिड दैट क्वेश्चन रॉन्ग, एंड बाहर आके मुझे दुख भी नहीं था उस क्वेश्चन का कि वो क्वेश्चन गलत कर लिया मैंने, ये किसको आता होगा ये। Exactly. Until someone has prepared for civils and all that. हाँ. So, now $1 million question that why psychiatry, right? Because right now you are in the and that phase you can easily prepare for NEET and you can get uh, so considered by the mainstream people that medicine or something that is highly remunerative or something like that. Right now you can prepare and go for it. So why you are just going for AIIMS Gorakhpur psychiatry? Why are not you preparing for NEET? Um, Actually, I don't know. Taking psychiatry is not a very hard decision for me. Since first year, I had in mind कि मुझे psychiatry लेना है. My father is a surgeon, so वो भी अपने time को बताते हैं कि his second choice was psychiatry. So I just had in mind कि psychiatry लेनी है, and थोड़ा सा हाँ, like people say a lot of things about कि ये लो ये मत लो ये लो. I think radio and derma are the only branches जिसके बारे में कोई तुम्हें वो नहीं करेगा कि सोच ले कर ले. बाकी with I think कोई भी ब्रांच तुम्हें लेनी होगी, people will always say कि अरे नहीं ना, take derma, take radio. ना, people are always going to say that, but for me I it was psychiatry always, I since first year. Okay, great. So, final part that seeing you have been in a private medical college and you have now cracked into AIIMS. So, somebody who is getting into the system is somebody who is in first year or second year. What message would you like to give to them so that they enjoy their life at that point of time also, and they have a good future also? I would say don't take NEET UG very seriously. Like coming into as somebody, I think any graduate, be it from private or government medical college, can understand कि 11 12 की syllabus का कोई relation नहीं है medical field से. It does not help. Those things शायद हो सकता है Krebs cycle आपने सुन रही हो, but that won't help. Yeah. तो मुझे लगता है कि डोंट जज योरसेल्फ ओवर एन एग्जाम, ओवर अ सिलेबस व्हिच इज नॉट इवन इम्पोर्टेंट राइट नाउ. Just take it as a new journey, take it as a new thing you're entering into. Take NEET PG as a very different exam from NEET UG. Don't judge yourself. I did that. I think it is being from a private college, just 5 years of thinking कि हम पीछे हैं, we have to prove ourselves. So even I have done that, thinking कि नहीं यार, मतलब NEET UG तो हुआ नहीं, अच्छा नहीं हुआ. बट आई थिंक कि वो चीज आपको सिर्फ रोकती है. काइंड ऑफ, आई शुड नॉट से so harshly, but those are just excuses. This is a different exam, take it differently. You still have plenty of opportunities. Life is not going to give you just one exam, just one opportunity to prove yourself. This is again a different opportunity, a different exam. So take a different mindset for it. And this is the subject we chose. We didn't choose physics and chemistry in 11 12, but right, we chose medicine. So these are our subjects, these are our 19 subjects. Okay, right now, I would ask rather a personal question. Like, because you did not get into NEET UG, does that acted as an extra fuel to, okay, I have to prove myself, I will give my 110% for this exam. Did it happen like that or no? It was your cool way of studying and nothing else. नो, दैट डेफिनेटली हेल्प मी. मतलब आई थिंक कि ये मेरा बिगेस्ट मोटिवेशन था कि यार नहीं, अब आई हैव टू डू इट दिस टाइम, बिकॉज आफ्टर नीट आई वुड से मेनी ऑफ माई बैचमेट्स वर टेकिंग सीट्स, some in like good government colleges, some in private colleges. So बहुत peer pressure था to take something, anything. And कि मतलब कुछ लोगों का था कि यार ले लेना, प्राइवेट ले ले, क्या फर्क पड़ता है, and नहीं फर्क पड़ता है, अग्री विद दैट. बट आई जस्ट हैड टू सी कि मेरा 100% क्या है. आई हैड टू नो कि मैं अगर 100% दूंगी तो मेरा क्या रिजल्ट आएगा. इवन दिस रिजल्ट आई डोंट थिंक कि मेरा 100% था. आई फील लाइक कि मेरा 90% था. 100% और बेटर होता. बट मतलब वो करना था. आई हैड टू सी कि क्या मैं कर सकती हूँ. आई के नॉट लाइक जस्ट टेक अ सीट थिंकिंग कि, मतलब मुझे वो था मेरे दिमाग में, वो बहुत बड़ा मोटिवेशन था कि मुझे अब करना है ऐसे भी. Okay, great. And anything that you would like to else talk about? I would just say कि surround yourself with people who believe in you. I had my parents. My parents are very supportive. They never questioned my decisions of taking a year for preparation or preparing for November INI. They have never said things like कि AIMS बेटा रहने दे, होगा नहीं होगा.
They were very supportive. My brother, he has been very helpful in keeping me happy पूरे time throughout this journey. My friends, we had a WhatsApp group जिसमें हम questions discuss कर लेते थे, थोड़ा rant कर लेते थे कि अरे यार ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है. We were always very transparent with our notes, our preparation. तो वो कंपटीशन वाली फीलिंग, आई वुड से सराउंड योरसेल्फ विद पीपल जो प्रॉफ की तरह पढ़े हैं. प्रॉफ में यू डोंट हैव एनी कंपटीशन, प्रॉफ में यू फील लाइक सब पास हो जाए. तो ऐसे ही रखो, एक ग्रुप रखो जिसमें कोई वो फीलिंग ना हो कि मैं इससे अच्छा, मैं इससे अच्छा. ऐसे हो कि सब पास हो जाए, सबका हो जाए, एंड इट फील्स ग्रेट जब सबका हो जाता है. Great, great. So, just one more question: that how you studied? I mean, that many people are like they have discussion partners. They discuss a lot with their discussion partners. And some have two or three discussion partners. Some are in their own shell, not discussing with anyone. They are studying within themselves only. So, what was your preparation mode, and which is more favorable? आई थिंक मेरे लिए बीइंग आइसोलेटेड वुड नॉट हैव वर्कड. इट इज अ वेरी लॉन्ग जर्नी. इट इज ऑलरेडी डिप्रेसिंग कि हम पढ़ रहे हैं. पढ़ना किसी को बहुत मजा नहीं आता है पढ़ने में. इट इज ऑलरेडी कि यार सब मजे कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं. तो आई वुड से कीप योर सेल्फ अराउंड पीपल. बट आई वॉज नॉट अ डिस्कशन पर्सन. मैंने ऐसे कभी डिस्कशंस नहीं करे हैं किसी टॉपिक्स के. बट हाँ, डाउट्स डिस्कस होते थे. लाइक कोई जीटी दिया, नई क्वेश्चन हो रहे हैं तो व्हाट्सएप पे भेज दिया, हेल्प मांग ली लोगों से. मतलब कभी आई नेवर फेल्ट कि हेल्प नहीं मांगनी है. आई वॉज ऑलवेज सराउंडेड विद पीपल जो हु आर हेल्पफुल. आई यूज टू हेल्प देम. आई वुड से आइसोलेशन, सोशल मीडिया वगैरह तो क्विट करना इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट. वो पहला काम है विच यू शुड डू इफ यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन. उसके पार्ट डोंट isolate yourself from everybody. Okay, great. It was really nice talking to you, and my many best wishes for your future, and may you shine like this. It was nice talking to you. Thank you. Thank you.